Hello student, welcome to Easy to Learning Hindi. I think audio video is clear now. Please response कीजिए. Audio video clear है ना? Just a minute. Please response. Clear है ना? Okay. I think it's clear ना? Please share the live session. चलो शुरू करते हैं. देखो प्रोबेबिलिटी जो चीज है ना, ये बहुत. चलो स्टार्ट. चलो. Okay. I think all things are clear now. Audio, video, everything. See, today the topic is probability, right? It's a very weak topic. So हम लोग क्या ट्राई करते हैं ना, थोड़ा शॉर्ट करके इसको कैसे समराइज करना है. ठीक है. चलो. तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी. इसका फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है. दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी. तो इसमें क्या क्या है वो देखना पड़ेगा. कुछ थ्योरी इसमें है फर्स्ट चैप्टर में. वी हैव टू नो द थ्योरी, some basic theory of basic probability theory, right? So first one is a random experiment. Probability থেকে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে probability কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে সাজেশন দেবেন. দেখো probability probability আমরা সব চ্যাপ্টারই সলভ করব. তো আমরা ইজি টু লার্নিং হিন্দি চ্যানেলটা থ্রু সাজেশন দেবো. তো থ্রু হিন্দিতেই আমরা পুরো জিনিসটা দেবো. অভিষেক माहिती. देखो फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या
इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में he cannot explain more in more details. We already explain it in my class. Okay. So first, what is random experiment? This is an important definition for first basic probability theory. So for random experiment definition is very important with example. Okay, with example. Right. Next, sample space. सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग definitions for basic probability theory. Okay, after that, what is event? We have to know this definition of event. What is event? Suppose we uh, suppose I have a sample space S, we have doing the random experiment, a coin tossing like. Okay, so this is known as event, right? Any subset of a sample space S of random experiment is known as event. All right. Okay. So this is event, and another definition is more very much important. That is impossible event. Impossible event. This is very important. So first we discuss the important keynotes of the chapter. Then we discuss some problem of this chapter. Okay. This is the way out of the suggestion classes. Next, what is the definition? Complementary event. We already know the definition of the complementary event. Suppose uh, this is the notation of the complementary event. Suppose some element which is in A but not in A complement, that's why it's called A complement. Not in A, right? Okay. And another two very important definitions are there, like mutually exhaustive events, some problem fees for semester, right? Of course. देखो पहले some definitions और keynotes डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा. ओके, तो फर्स्ट कुछ टर्म तो मतलब अ, क्या है ना, कुछ टर्म के साथ मतलब इंट्रोड्यूस होना चाहिए फर्स्ट, उसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. तो देखो, we discuss only term, not details in definitions. Okay, just we discuss what is random experiment. Random experiment term is there, important term for first chapter. Sample space is an important term for first chapter. Event is an important term for first chapter. Impossible event is another important term for first chapter. Complementary event, right? So another definition is there, like mutually exclusive events. Okay, mutually
mutually exclusive event, this is another term, and pairwise disjoint event. Okay, and after that exhaustive event. Okay, exhaustive event, and last one is a equally likely sample point. Okay, these are all the important keynote of the first chapter, basic probability theory. Okay, all right. Now we come to the classical definition of probability, right? So suppose a perfect die, suppose we take a problem. Okay, suppose we do a toss of a coin, right? So I ask you, तो मेरा क्वेश्चन ये है, हेड, what is the probability, my question is what is the probability, what is the probability of getting head. मतलब हेड पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, so p of a, suppose a is the probability of getting head, we can write as a 1/2 na. So how to get this p of a equal to 1/2? From the classical definition of probability, we get p of a equal to 1/2. So classical definition of probability said that p of a equal to n of a by n of s. What is n of a and what is n of s? Suppose a random experiment E is happened on a sample space S. Okay, you have a sample space, आपके पास एक sample space S है, हम एक random experiment E लेते हैं, ठीक है? तो A sample space contains finite numbers of sample points. Okay, so that's why you have a sample space S, and there is a random experiment E. E is any random experiment on this sample space. Okay, मतलब E का random E random experiment का sample space S, right? Okay, and S contains finite numbers of finite numbers. S contain finite numbers. So we can write as a n of S. The cardinal S contain finite numbers, so cardinality of S is n of S. Okay, and Na means suppose the event is A, suppose the probability of an event A which contains Na samples points, right? Which contains Na sample points.
So we can write P of A equal to n of A by n of S. So that's why we can write as a for getting head. What is the possibility of getting head? Suppose हम एक कॉइन टॉस करते हैं ना, उसके बाद हेड पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 है, बिकॉज एक कॉइन में एक हेड और एक टेल होता है ना। স্যার কেমন আছেন? ভালো আছি পুষ্পেন্দু। तो हेड 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 पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है ना। तो और टोटल सैंपल स्पेस क्या है? 2 है। मींस अब एक कॉइन से क्या क्या आता है? एक हेड आता है, एक टेल आता है। So P of A equal to 1 by 2. This is the class from classical definition of probability. We get this. Okay. So this is very important keywords for first basic probability theory. Okay. इसके बाद क्या है ना, डाइस के थ्रू एक प्रॉब्लम है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सपोज आई से ए परफेक्ट डाई, a perfect for short question और very basic in elementary questions के लिए ये important है। okay, a perfect die is rolled once and observe whether an odd number appears. Same problem for dice. Okay, suppose if A is the event, A denotes this event. A event क्या है ना, A events, ए इवेंट में क्या क्या एलिमेंट है? ए इवेंट में एलिमेंट है 1 3 5। सपोज आई थ्रो अ डाई। ओके, हम एक डाई को थ्रो करते हैं, उसके बाद क्या क्या इवेंट में क्या क्या आता है? मैं बोल बोल इसमें गिवन है क्या ना, वेदर एन ऑड नंबर इज अपीयर्स, राइट? सो ए इक्वल टू 1 3 5 ऑड नंबर। ओके, सो सैंपल स्पेस क्या है? देखो, हम एक डाई को थ्रो करते हैं ना, उसके बाद क्या क्या सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आएगा? सैंपल स्पेस में एलिमेंट आता है क्या? एस क्या होगा? एस होगा 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस में ए सारे एलिमेंट आएगा ना। और हम क्या बोल रहा है ना, ऑब्जर्व वेदर एन ऑड नंबर अपीयर्स। इवेंट में क्या है ना, ऑड नंबर्स अपीयर्स होता है ना, तो a इक्वल टू 1 3 5। okay, so using classical definition of probability, so for this n of a equal to क्या है होगा 3 and n of s equal to क्या होगा 6 होगा। मतलब a में 3 एलिमेंट्स है, so n of a equal to 3 and s में 6 एलिमेंट है, so n of s equal to 6. So we can write P of A equal to n of A by n of S. So 3 by 6. From the classical definition of probability, we can write this. So this is a 1 by 2. Okay. Similarly, for event phase. Okay. So this is the another important things. So we see some important terms, basic important terms for from probability, like random experiment, sample space, event. This is the very important terms for first chapter, and classical definition of probability. This is another important things for first chapter. Okay. Next some there is some theorem. This is very much important. So first theorem is a
probability of any event A lies on 0 to 1. This is very important. The statement is very important, not proof. Okay, for any event A. This statement is very important, and another statement is first statement is this, and another statement is वो भी very important है. Like P of S का probability क्या होगा? S P of S. S means whole sample space का probability 1 होगा. Okay, and P of phi क्या होगा? P of phi होगा 0, right? P of phi क्या होगा? वो 0 होगा. Where S is certain event, S is certain event, S is certain event, and phi is a impossible event. Okay, all right. Chalo. This is another thing. Next theorem. Okay. उसके बाद और एक theorem भी important है. If A1 and A2, another result. This is also important. क्या है ना? A1 and A2 two mutually exclusive events. Okay. B2 mutually exclusive event. A1 and A2 are two mutually exclusive event. Then we can write P of A1 union A2. This is very important result for solving any types of sort problem for basic probability theory. We can write as a P of A1 plus P of A2. Just recall all the result. Okay. This is another important statement, and like suppose P of A1 here, A1 and A2 two mutually exclusive event, right? Suppose we take n mutually exclusive event. Suppose A1 A2 dot 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 करके an तक हम म्यूचुअली exclusive event लिया तो क्या होगा? So we can write these P of A1 union A2 union A3 dot 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 union an. Okay, equal to, we can write as a P of A1 plus P of A2. That's why we can write plus P of an. Right? This is another important result for the probability. Okay. So this is enough for the theory part for basic probability theory. Okay, and I think this is enough. Okay, so another important definition is there also, axiomatic definition of probability. This is very much important. So try to recall the definition, axiomatic definition of probability. ये वाले जो definition है ना, axiomatic definition of probability,
This is very much important for your upcoming examination, BTech third sem. For short question, this is very important. Axiomatic definition of probability. So we cannot write properly, but still we just try to hint this. So there is three axiom. First axiom 1, and axiom 2, and axiom 3. We already explained in our class. So what is the axiom 1? Axiom 1 क्या कहता है? Axiom 1 says P of A be any event like that. स्टेटमेंट क्या है ना, ई आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट देते हैं, ई बी एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, इज बी एनी सैंपल स्पेस, ओके, फॉर एनी इवेंट ए, p of a like greater than equal to 0 for every event a, right? And axiom 2 क्या होगा? p of a is equal to 1, right? And axiom 3 means like this condition. This is my axiom 3. Suppose a1, a2, like dot 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 be finite or infinite, finite or infinite, sequence of pairwise, mutually exclusive, mutually exclusive events, then p of a1 union a2 union dot dot equal to p of a1 plus p of a2. That's why you can write. This is very important things for your upcoming 2026 examination. Okay. So now we come to the problem. Okay. Some important problem for upcoming examinations. So basic problems like these types of problem is very much important. Using classical definition of probability, क्या है ना, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करके जो सारे प्रॉब्लम होता है ना, वो वाले प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट से फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके, लाइक सपोज just a minute. Suppose two coins are tossed. Take an example like this. Two coins are tossing together. Means you have a two coins.
we have tossed together. So what is the sample space of these random experiments? So ये क्या क्या होगा? हेड हेड एक पॉसिबिलिटी होगा, हेड टेल एक पॉसिबिलिटी होगा, टेल हेड एक पॉसिबिलिटी होगा, और टेल टेल और एक पॉसिबिलिटी होगा. सपोज मैं तो सपोज आई आस्क यू हेड पाने का पॉसिबिलिटी क्या होगा? हेड कितने टाइम्स आ सकता है? तो हेड सैंपल स्पेस में क्या कितना एलिमेंट है? एन ऑफ एस क्या होगा? एन ऑफ एस इधर 4 होगा, राइट? और हेड पाने का पॉसिबिलिटी कितना होगा, मतलब हेड पाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 2 3 3 टाइम्स हेड आ सकता है ना. तो एन ऑफ ए क्या होगा? हेड पाने का जो पॉसिबिलिटी होगा है ना, उसको ए एज्यूम कर लेता है. तो एन ऑफ ए क्या होगा? एन ऑफ ए 3 होगा. तो axiomatic definition, by axiomatic definition of probability, p of a क्या होगा? 3/4 होगा. This is a very basic problem like that. Okay. तो ये वाले प्रॉब्लम ये डाइस के थ्रू आ सकता है, ठीक है? तो आई थिंक इस टाइप को समझ गया ना? ओके. नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड से फॉर अपकमिंग योर थर्ड सेमिस्टर एग्जामिनेशन, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट चैप्टर. दिस इज कंडीशनल probability. This is very important for first chapter. तो एक बार थोड़ा बहुत डेफिनेशन लिख देता है, ठीक है? मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है वो लिख देता है, हाँ? तो टू इवेंट है तो तुम्हारे पास, सपोज ए एक इवेंट है एंड बी बी अनदर इवेंट है. ए एक इवेंट है, बी बी अनदर इवेंट. ओके. तो ए बी, ए एंड बी आर क्या है ना, कनेक्टेड है. ए एंड बी आर कनेक्टेड with a random experiment, with a random experiment E. E एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, E के थ्रू A एंड B कनेक्ट है. ओके. सपोज A जो इवेंट है ना, A इवेंट ऑकर्स एनी टाइम्स. ये जो इवेंट है वो ऑकर करता है एनी टाइम्स, एंड B अनदर इवेंट है which is occurs n b times, right? Okay. And suppose B occurs simultaneously with A intersection B times. Suppose we have told that B occurs simultaneously with A n of A intersection B times in the
n repetition of experiment E. Suppose we remove these condition, B occurs in B time. This is not needed. So suppose A has occurs in a time. First, this is the condition, and B occurs simultaneously with a n of A intersection B in the n repetition of the experiment T. Right? Then we say n of A intersection B by Na. Okay, n of A intersection B by Na is called conditional probability of B, right? Suppose A occurs simultaneously with B. Suppose B occur in B time and A occurs simultaneously with N A. We have then we see suppose A occurs in A. Okay, first see A वाले चीज देखो first. A occurs n times, right? A has occurs n times and B occurs simultaneously with A. Okay. Then n of A intersection B in the n repetition of the experiment T. What is this? N. So I think this line is clear, na? तो n of A intersection B by Na, this रेशियो को हम conditional probability of B कहते हैं. Conditional probability of B on the hypothesis that A has already occurred, right? This is known as conditional probability of B on the hypothesis that A has already occurred. देखो फिर एक बार रिपीट कर देता है. देखो A already occurs in a times, okay, and B occurs simultaneously with A, okay. A occurs in a times already. A occurs. ये जो इवेंट है ना, जो ये जो सिचुएशन ए का जो सिचुएशन है वो एनी टाइम्स ऑलरेडी हैपेंड, बट then B occurs simultaneously with A. Okay, that's why we say the conditional probability of B on hypothesis that A has already occurred. Similar case, suppose, okay, this is a notation. What is the notation? Conditional probability of B का notation क्या है? We can denote this P of A, sorry, P of B by A. In this way, we can represent the conditional probability of B. जो सिचुएशन, जो इवेंट फर्स्ट ऑकर हो गया, उस वो वाले चीज क्या है होगा ना, वो वाले चीज ये डिनोमिनेटर में रहेगा. सपोज बी इवेंट has occurred and A occurs simultaneously with B, then we can write as a n A intersection B in the n repetition of the experiment of E. We can write this for similar case. Suppose B already occurs in B times, then conditional probability, we have to find conditional probability. What is the result of the conditional probability of A on the hypothesis B has already occurred? Then we can write as a n of A intersection B by n of B, right? So this is known, this can be written as P of A by B.
I think understand na. Similarly, we can write in this way also. P of A intersection B, sorry, P of A by B, P of A intersection B by P of B, or P of B by A, this can be represented as a P of A intersection B by P of A, right? I think it's a clear conditional probability is clear. This is very important topics for this upcoming examination. So these two result is very much important. Suppose when conditional probability of B, then P of B by A, and conditional probability of A, this is P of A by B, right? This is these in this way we can represent. Also we can represent as a N of A intersection B by NB, and N of A intersection B by NA. All right. ओके तो इस चैप्टर में जो जो प्रॉब्लम आएगा ना वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हेल्प 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 के थ्रू जो प्रॉब्लम होगा वही आएगा इस चैप्टर में. चलो तो नेक्स्ट एक दो प्रॉब्लम देख लेता है. सपोज let one card be drawn from a full pack. एक क्वेश्चन देख लेता है. हाँ, one card be drawn from a full pack. Suppose A is a spade and B is a king. Then probability of, then find the probability of, okay, we write the answer directly. So probability of king supposing spade occurs. Okay, supposing spade occurs. So we can write this as a P of B by A. तो P of B by A क्या होगा? N of A intersection B by N of A, जो डिनोमिनेटर में होगा ना उस टर्म ही ये वाले एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर में होगा. तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? 1 होगा ना, राइट? मतलब फर्स्ट किंग होगा और फर्स्ट स्पेड ऑलरेडी मिल गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, राइट? तो बी इज किंग एंड ए इज स्पेड. स्पेड का किंग तो एक ही होगा ना, तो 1 होगा. और एन ऑफ ए क्या होगा? टोटल स्पेड मतलब 52 कार्ड्स में टोटल स्पेड कितना होगा? 13 स्पेड होगा ना, तो 1/13. राइट, अंडरस्टैंड ना? तो ये वाले प्रॉब्लम इज
ये वाले प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट टर्म है, क्या है ना, वो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, independent event. This term is very much important also. तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है ना, सपोज टू इवेंट, ए एक इवेंट है एंड अनदर इवेंट बी, ओके, दे आर stochastically independent, right? Or independent, suppose they are A and B are independent and B are, if they are independent, if and only if we can write P of A intersection B equal to P of A into P of B. So this is very important, right? So independent event का जो condition है, this is really important for the solving any types of problem. Suppose you write these, just a minute, huh? Suppose I am saying A and B two independent event. For this case, suppose you have right conditional probability of A, you can write you write P of A by B equal to P of A intersection B by P of B, right? You already write this. Then I told you the A and B are independent. मैं आपको ये कंडीशन दे दिया, A and B independent है, तो इस स्टेप से you can write this P of A into P of B by P of B, right? So we can write as a P of A, P of B and P of B are cancel out, so it's a P of A. So for this, we can write P of A intersection B equal to P of A into P of B. I think clear to all, everyone. इसके बाद और एक प्रॉब्लम है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. So let one card be drawn from full pack and A equal to spade and B equal to king, then P of B by A equal is what? Means B already occurred, king already occurred. Sorry, B already occurred. Na? A already occurred. Okay, spade already occurred, and find the probability of king, right? So P of B by A what? So we can write P of B by A equal to
n of B intersection A by n of A, right? So B intersection A means 1 by 13, right? Again, you can write as a P of B is what? P of B means n of B by n of S, right? So P of B equal to n of B by n of S. B means the event where getting the king number, the event number of event where getting king, and A is a S is a whole sample space, means टोटल किंग्स कितना है, टोटल किंग का नंबर कितना है, 4 होगा। और टोटल नंबर सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 52 ना। तो ये क्या होगा, 1/13। सो P of B by M is 1/13 and P of B also 1/13, right? So for these two result, we can write P of B by A equal to P of B. So in this experiment, skiing and spade are independent event. We can conclude that in this experiment, king and spade are independent. Right? Like A is a spade and B is a king, and after that calculating क्या मिल गया ना, B P of B by A equal to P of B मिल गया. So for this experiment, we can conclude the king and spade are independent. Okay, I think clear to all. And another important topic is there for first chapter is a Bayes theorem. And one problem I think तुम एग्जाम में मिलेगा है, बेस थ्योरम से वन प्रॉब्लम तो आएगा शायद एग्जाम में। तो बेस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट आप ठीक से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता है बेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद मैं प्रॉब्लम पे जाऊंगा, ठीक है। तो बेस थ्योरम, तो बेस व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सपोज यू हैव given a1 a2 n are n pairwise mutually exclusive and exhaustive event. Then for any event A where P of A not equal to 0, okay, then we can write as the first two statement is there. One is the P of A equal to, we can write P of A1 into P of A by A1
plus P of A2 into P of A by A2 plus P of A3 এরকম করে P of A3 dot 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 P of AN into P of A by AN, right? This is the first theorem. I think clear ना फर्स्ट वाले स्टेटमेंट. इसको हम ऐसे लिख सकता है summation of I equal to 1 to n P of AI into P of A by AI, right? This is another represent of Bayes theorem. Bayes theorem is very important. फर्स्ट चैप्टर में जो सारे प्रॉब्लम आएगा वो बेस थ्योरम से ही आएगा. तो बेस थ्योरम को आप बेस थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से मतलब रिमाइंडर रिकॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है. तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से रिकॉल करके जाइए. बेस थ्योरम से एक प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा. आपका जो अपकमिंग एग्जाम है ना उसमें बेस थ्योरम से एक प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा. तो फर्स्ट वाले कंडीशन ए है और सेकंड वाले कंडीशन क्या होगा. चलो लिख देते हैं सेकंड वाले कंडीशन क्या होगा. फर्स्ट वाले कंडीशन ए होगा और सेकंड कंडीशन इज पी ऑफ ए आई बाई ए. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ ए आई इंटू पी ऑफ ए बाई ए आई बाई पी ऑफ, राइट, फॉर आई इक्वल टू 1 to. Okay, this is the statement of Bayes theorem. प्रूफ नहीं चाहिए, जस्ट स्टेटमेंट को रिकॉल करना चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए. तो फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वो वाले वो एक बार लेंगे. चलो इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा. फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट जो टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है ये वाले प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड अर्न contains 4 white and 6 black balls. Two balls are successively drawn from the urn without replacement of the first ball if the first ball is seen to be white then what is the probability that second ball is also white. Second ball is also. This is very much very important problem. ये वाले प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट है. ये दिस टाइप ऑफ जो सारे प्रॉब्लम है ना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके हम करते हैं.
तो वो वाले प्रॉब्लम सारे इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट चैप्टर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। आप मैं सॉल्व नहीं कर दूंगा, ठीक है। मैं टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर लूँ। मैं सॉल्व नहीं कर दूंगा, मैं जस्ट आपके साथ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एंड अनदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके ये वाले प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट है। और बेस थ्योरम का और दो चार प्रॉब्लम है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो शायद बेस थ्योरम का और एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी लिख देता हूँ आपको। इन ए बोर्ड फैक्ट्री machine A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the total of their output, 5%, 4% and 2% are defective bolts. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. Then what are the probability that it was manufactured by machine ABC? This is the another important types of problem. देखो, हम टाइप डिस्कस करते हैं, मतलब ये वाले प्रॉब्लम ही आएगा ऐसा गारंटी मैं नहीं दे सकता, बट हम टाइप ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आएगा ये वाले गारंटी दे सकता है, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम इज बाय यूजिंग बाय बेस थ्योरम, ठीक है। तो बेस थ्योरम यूज करके ये वाले प्रॉब्लम हम सॉल्व करता है। तो ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं और खुद कर लेंगे। जो जो स्टूडेंट लाइव पर है प्लीज कमेंट, ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर दो और खुद कर लेंगे। तो बेस थ्योरम का ये ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है।
और एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, वो भी आ सकता है। और एक दो इम्पोर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है, तो मैं लिख देता हूँ। देखो, फर्स्ट दो क्वेश्चन लिखा मैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, और ये वाले टाइप का प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट है। फाइंड द, फॉर शॉर्ट प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that there would be two tails if biased, four unbiased coins are tossed. Okay, and next, number 4 problem, a box not a box, box A contains three black balls and three red. Then box B contains six black balls and four red. Okay, if a ball is randomly selected from each box, then find the probability, then find the probability that the two balls are red and one is black, right? So this is the another important problem. Okay, first one, this is the based on the Bayes theorem, and this is the based on conditional probability. This type of problem is very important, and this is the another problem for basic probability. And problem 4 is another important problem using mixed the conditional probability and Bayes theorem. And 5.1 is another problem, like 5 cards are drawn from a pack, 52 cards, 52 well shuffle cards. Sorry. Well shuffle cards, and find the probability of, find the
probability that 4 are egg and 1 is king, right? तो तो फर्स्ट चैप्टर में ये 5 टाइप्स का प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट है और लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम है यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूजिंग पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये वाले प्रॉब्लम आ सकता है सपोज वी अज्यूम this type of problem like if P of A intersection B equal to using basic probability theory we can solve this problem. P of A intersection B equal to 1 by 3, P of B equal to 3 by 5. Suppose I give you P of A equal to half, right? Then find that P of A union B is what, and P of A complement union sorry P of A complement intersection B complement is what, say suppose P of A complement union B complement is what, and P of A intersection B complementary is what. This type of small problem is very important for first chapter. Okay, so this is the all about the suggestion of first chapter. So we if we summarize this, first start with the basic term of the basic probability theory like random experiment, sample space, sample point, impossible event, complementary event, and mutually exclusive event, exhaustive event, equally likely sample point, and some short problems on these uh, classical definition of probability, right? Uh, Coin tossing, dice throw, and some basic theorems of probability. This a P of A lies on 0 to 1, this type of sorts theorem, right? And after that, axiomatic definition of probability. This is very much important. And उसके बाद क्या है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टाइप एंड उसके बाद बेस थ्योरम राइट एंड बेस थ्योरम के बाद क्या है ना इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है। तो ये वाले सारे टॉपिक्स इस फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू जो सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है मैं मेंशन कर दिया ये वाले टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है राइट। तो ये प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट करना और हमारा जो ग्रुप है इजी टू लर्निंग का उसमें कमेंट करना और लिखना हम सॉल्व कर देंगे ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है ना वो चैप्टर है क्या, चलो next। उसके बाद जो चैप्टर है ना वो चैप्टर है बार्नोली ट्रायल्स। हाँ, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो चलो शुरू करते हैं थोड़ा बहुत। तो बार्नोली ट्रायल में क्या है, फर्स्ट जॉइंट इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट। देन चैप्टर 2 इज अ बार्नोली ट्रायल, बार्नोली this is a chapter 2। okay, so इसमें स्टार्ट होता है जॉइंट इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट राइट। एंड उसके बाद क्या है ना बार्नोली ट्रायल्स,
some basic things, joint independent experiments. उसके बाद क्या है ना, बार्नोली trials for finite case and infinite case. जस्ट मैं रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक जॉइंट इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट एवरीबॉडी नोज ना, वो रिकॉल नहीं करता है, बट बार्नोली ट्रायल्स जस्ट रिकॉल कर देता है, ठीक है। सपोज ई हैव अ एक्सपेरिमेंट, let E be any experiment, okay, E is your any experiment, and you have only two possible outcomes, right? एक E तुमको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया, उसका क्या क्या आउटकम है, टू आउटकम्स है, वन इज अ सक्सेस एंड अनदर इज अ फेलियर। सो सक्सेस को हम एस नाम से डिफाइन कर देता है एंड फेलियर को हम एफ नाम से डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो इवेंट स्पेस एस इक्वल टू स्मॉल एस कॉमा स्मॉल एफ, ओके, राइट। देन then the sequence of then a sequence of n number of experiment, n number of independent experiment, n number of independent experiment, say en equal to, we can write as a e t up to n terms, okay, n tuples is called finite Bernoulli trial। इसको हम फाइनाइट बर्नौली ट्रायल से डिफाइन करता है, ठीक है, फाइनाइट बर्नौली ट्रायल, ओके, डिफाइन करता है फाइनाइट बर्नौली ट्रायल से। एंड इनफाइनाइट में क्या होगा ना, en के जगह पे e इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट में बर्नौली ट्रायल क्या होगा ना, e इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब e अप टू e इनफाइनाइट तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी तक जाएगा ना, अप टू इनफाइनाइट, okay, I think clear to all. This is a infinite sequence of Bernoulli trial, right? This is a finite sequence of Bernoulli trial and this is a infinite sequence of Bernoulli trial. I think clear to all, na? तो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट था। और there is another important tools for this chapter, like binomial law. This is another important law for this chapter. I think you have to recall the binomial law, okay. These three are main result of this chapter, okay, and using these Bernoulli trial we see some problem for your examinations, upcoming examinations, okay। Bernoulli trial से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम एक दो आ सकता है, ठीक है, बट दिस इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट बट not more important, okay, just using one formula is there, तो उस फॉर्मूला से ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बायनोमियल लॉ देखो,
in a finite Bernoulli trial En, if ai is a number of I number of success, I number of success, okay, I number of success, consequently n minus I number of failures, okay, numbers of failure, right? Then is what is this probability? Then its probability, what is its probability? Then is probability P of ai equal to, we can write as a NCI P to the power I and Q to the power n minus I, okay, and where P is P and Q means 1 minus P, okay, and P and Q are the probability of P and Q are the probability of success and failure, okay. P and Q are the probability of success and failure, okay. I think clear to all. So this result is so much important for this chapter. These two, the what is Bernoulli tiles, right? Finite infinite case में Bernoulli tile क्या होता है, and what is the binomial law? Using this binomial law, we solve all types of problem. Okay. So so इस चैप्टर में क्या क्या प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं. क्वेश्चन है, ये वाले टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, सपोज लेट ई बी द एक्सपेरिमेंट को हम शॉर्टकट में ऐसे EXP लिख देता है, ठीक है. एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग a ball from an urn containing 5 white, 7 black, 3 blue using binomials law. Okay, we solve this by binomials law. And red, 8 red balls. 8 red balls. So E एक एक्सपेरिमेंट दे दिया, ठीक है. Drawing a ball from an urn containing 5 white balls, 7 black balls, 3 blue balls, and 8 red balls. Okay, and you have to find. Suppose we can explain more details in this problem. This is the first problem, so we are try to explain more details. Okay, so in a draw, let we assume, suppose S is the ball is white, or the ball is white or blue. Okay, so P equal to क्या होगा? P equal to, suppose P of S is total balls क्या होगा? 5 plus 7 plus 3 plus 8, that is 23, and S is S का क्या क्या ऑप्शन है? S is a white or blue, right?
पहले व्हाइट बॉल्स कितना है, 5 व्हाइट बॉल्स एंड ब्लू कितना है, 3 ब्लू, तो 8/23। तो क्यू क्या होगा, क्यू इज द 1 minus p, that is 1 minus 8/23, that is 15/23, right? Is it clear to all? Suppose if the experiment E is repeated 9 times, then what happens? Then probability of 4 success among these 9 trials. Suppose we have to find the probability of 4 success among these 9 trials. We have to, this is my question, probability of 4 success. Probability of 4 success among these 9 trials. ये क्या होगा, P of A4, right? So this is what, 9C4, right? 8/23 whole to the power 4 and 15/23 whole to the power 9. जस्ट फॉर्मूला से हम ये लिख देता है ना, तो जो आंसर आएगा वो आंसर, ठीक है। So this is very important types of problems using binomials law, and another important types of question in this chapter. Suppose in five throw with a coin, in a 5 throw with a coin, find the probability of, first question is a 3 head, second question is at least 3 head, and third question is at most 3 head. Okay, this is the another important problem for this, another important type problems, not type of this problem. Next, question 3, another important question for this chapter, like if 20 dates are named at random, and what is the probability, we just mention the types of problem, we are not solving this problem. तुमको सॉल्व चाहिए तो कमेंट में लिख देना, और हमारा जो इजी टू लर्निंग का जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप में मेंशन करना, हम इसको सॉल्व भी आपको वीडियो के थ्रू दे देंगे, ठीक है। सजेशन का क्लास का हम लोगों का मोटो है, जो थ्योरी पार्ट है, बेसिक थ्योरी पार्ट, वो सब थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे, उसके बाद जो सारे प्रॉब्लम का टाइप इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा मोटो था सजेशन क्लास का। तो इस क्लास में हम ऐसे ही करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत थ्योरी डिस्कस कर देता है, ये वाले थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये वाले टर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये वाले फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाले टूल्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो जो टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है उस प्रॉब्लम लिख देते हैं। तो उस तो हम ये जो जो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है ना वो लिख दिया। देखो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके, मतलब हम टाइप के बेसिस से प्रॉब्लम लिखा। हाँ, तो
तुम उसको सॉल्यूशन नहीं तुमको तुम्हारा उसको सॉल्यूशन चाहिए तो तुम कमेंट में लिख देना और हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में मेंशन करना, ठीक है। बट ये वाले प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही चाहिए। Then what is the probability that three of them will be Sundays? This is very important problem for your upcoming examination. और एक प्रॉब्लम है, चलो लिख देते हैं। क्वेश्चन 4, in an infinite sequence of Bernoulli's Bernoulli trial with probability of success 1/3 and find the probability that 7 failures will the first success. Okay, so this is the question 4. This is another important question, and question 5 और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। सॉरी, A and B show alternatively with a pair of dice. A wins if he throws 8 before B throws 5. Okay, and B wins if he throws 5 before A throws 8. Then find the probability that A wins. Okay, so this is the 5 important types of problems. Okay, so please
take all the 5 types of problem. This is very important in your upcoming examinations. For this chapter, फर्स्ट चैप्टर में हम 5 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखा था और सारे जो जो बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये सारी चीज देख लिया। और सेकेंड चैप्टर में बर्नौली टाइल में भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था बर्नौली टाइल, उसमें जो 5 टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो हम देख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो इसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो ये वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे रिजल्ट है, बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टी भी है, अच्छे से रिकॉल करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट वी स्टार्ट चैप्टर 3। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फर्स्ट चैप्टर में, क्या ना, रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक टर्म है रैंडम वेरिएबल में, वो क्या है, स्पेक्ट्रम, SPECTRUM। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। उसके बाद क्या है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। उसके बाद क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस random variable। and इसके बाद इवेंट described by random variable। These are three important keywords or tools for this chapter। Okay, and इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दिस इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को शॉर्टकट में क्या लिखता है, PMF। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज दिस, लेट x be discrete random variable, x be a discrete random variable। ओके, रैंडम वेरिएबल को हम शॉर्टकट में R भी लिखते हैं, which assumes some value, which assumes some values, which assume the values, suppose x0, x1, x2, xn। okay, let p x equal to xi। okay, equal to f of xi। we can write f of xi को f of I, we can represent f of xi equal to f of I, right? So the value of
fi, the value of fi, which is depends on xi, right? Which is depends on xi, value of fi which is depends on xi. That is this function fi. This function fi is called, this function fi is called probability mass function, PMF. Alright, this fi is known as probability mass function. X is a discrete random variable. Here x is a discrete random variable. We already know about the discrete random variable, right? And then p of xi equal to f of xi equal to fi. So the value of fi always depends on xi. This fi is called a PMF, that is probability mass function. So this is very important for this chapter. Okay, probability mass function. Probability, इसके probability mass function में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं, चलो. ओके, एंड जो ऑर्डर पेयर होगा ना, वो एक्स आई, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से एक्स आई कॉमा एफ आई, हाँ, set of ordered pair xi comma fi is known as discrete probability distribution. Okay, discrete probability distribution of the random variable x. This xi comma fi is a discrete probability distribution of the random variable x. So how to represent the discrete distribution? Okay, this is very important. How to represent? रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत देख लेता है, चलो. तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक्स और ए फाइव, राइट. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का डेफिनेशन में हम ऐसे डिफाइन किया ना, पी को पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई. तो हम इधर एक्स ले लिया और एफ आई ले लिया, ठीक है. तो देखो, एक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू से करके डॉट, एंड दिस इज एफ जीरो, एफ वन, एफ. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ discrete distribution. This is a representation of discrete distribution. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट. चलो नेक्स्ट. तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंट देख लिया. फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, पीएमएफ का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज है, वो एक बार रिकॉल करना पड़ेगा. पीएमएफ का जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी से ही पीएमएफ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा. तो वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, देखो, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ, राइट. तो क्या प्रॉपर्टीज है? इफ
x is x0, x1, x2, x3, and fi is f0, f1, f2, f3. Okay, then is a discrete distribution. Is a discrete distribution of x. All right. Then PMF, then probability mass function PMF has following two properties. PMF has following two properties. Okay. First one is a, just a minute. First one is a Fi greater than equal to 0, and second one is a summation of I Fi equal to 1. So these are the following two properties. Clear? Clear to all? Okay. So another, so this is the two conditions, two properties, following two properties, summation of one is a Fi greater than 0 and another one is the summation of Fi equal to 1, right? Uh, इसके बाद two important definitions, another two important definitions are there, like distribution functions, distributions function. This is the important definition for this chapter, or cumulative distribution function, right? Cumulative distribution function. These are another important things for this chapter, right? तो एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है? ओके, एंड इसके बाद जो चीज है ना, एक्सपेक्टेशन और मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन और मीन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो चलो एक बात देख लेते हैं, एक्सपेक्टेशन और मीन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम. एक्सपेक्टेशन और मीन.
of a discrete random variable. Expectation or mean of a discrete random variable, right? Say, suppose let x be any discrete random variable, x be a discrete random variable. ओके, सो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, चलो देख लो. उस डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स एफ आई, राइट. तो एक्स एफ आई को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, डॉट डॉट करके एक्स एन, राइट, एंड एफ जीरो, एफ वन, एफ टू, एफ एन, right. Then mean or expectation, mean or expectations, then the mean or expectation or expected value of x is denoted by e of x, right, or m of x. How to represent e of x? E of x equal to x0 f0 plus x1 f1 plus x2 f2 plus equal to, I can represent as a summation of fi. Okay. Provided the series is absolutely convergent. Absolutely. I think everyone knows about absolutely convergent. We already discussed in the class. If the above sum is an infinite series. The above sum is an infinite series. Okay. Similarly, the mean of a function, similarly the mean of a function phi x of the discrete random variable x, which is denoted by e of phi of x, right? And how to define e of phi of x? e of phi of x को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, चलो देख लो. e of phi of x equal to summation of I phi of xi fi. Okay, this is the representation of e of phi of x. I think clear to all. तो एक्सपेक्टेशन का कुछ प्रॉपर्टी है, वो आपको रिकॉल करना पड़ेगा. तो देख लो एक बार एक्सपेक्टेशन का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी. तो एक्सपेक्टेशन का कुछ प्रॉपर्टी है, एक बार देख लो. तो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है. चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस.
I think everybody knows about the expectation का क्या क्या properties है. E of A equal to uh, E of A equal to A, first one properties, and second one is the क्या होगा, number two property E of X plus B equal to, we can write as a E of X plus B, and property 3 is the E of A phi X plus B equal to, we can write as a E of phi of X plus E of B. So that's all. These are the properties of expectations. Okay. तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर में, इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है वेरिएंस, राइट. आई थिंक एवरीबॉडी नोज अबाउट वेरिएंस. एंड इसके बाद क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशंस. ओके, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हम वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है VAR ऑफ एक्स, राइट. VAR ऑफ एक्स इज व्हाट? VAR ऑफ एक्स इज E of x minus m whole square, right? Where m is E of x. Okay, and positive square root of variance is known as standard deviations, right? उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम सिग्मा से स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं. सिग्मा इक्वल टू प्लस रूट ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स. सिग्मा इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. okay? तो ये वेरिएंस का बहुत सारे थ्योरम है. आई थिंक वो आपको रिकॉल करना पड़ेगा. वेरिएंस का थ्योरम को यूज करके सम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. तो वेरिएंस का जो सारे थ्योरम है ना, थ्योरम ऑन वेरिएंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so like this type of theorem, like variance of x equal to E of x square minus m square, ये वाले टाइप ऑफ जो सारे थ्योरम है ना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ चैप्टर 3. ओके, तो चैप्टर 3 से कौन कौन सा टाइप का प्रॉब्लम आएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं. चलो, चैप्टर 3 का प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म कर दूंगा. तो चैप्टर 3 में ऐसा तो ये टाइप का प्रॉब्लम आएगा. देखो, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने का प्रॉब्लम आएगा फर्स्ट चैप्टर में. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ सकता है. फाइंड द PMF, सॉरी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ओके, तो of the number of heads when a fair coin is tossed repeatedly until the first tail appears. Okay, तो PMF फाइंड करने का जो सारे प्रॉब्लम है ना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशंस. नेक्स्ट, प्रॉब्लम 2.
let fx equal to 0 when minus infinity less than x less than 0, 1 by 5 when 0 less than equal to x less than 1, 3 by 5 when 1 less than equal to x less than 3, and 1 when 3 less than equal to x less than infinity. The question is so that fx is the possible distribution function. Fx is a possible distribution function and determine the spectrum and the probability mass function of the distribution. Determine next the determine the spectrum and probability mass function of the distribution. Okay, this is very important types of problem. This is very important types of problem. Another important types of problem क्या है ना, देखो just a minute. Another important types of problem is, hello, problem 3, the distribution function fx of a variate x is defined as follows. Capital Fx equal to a b c d, right? A minus infinity less than x less than minus 1, minus 1 less than equal to x less than 0, c is the 0 less than equal to x less than 2, and d is the 2 less than equal to x less than infinity, right? So where ABCD is what? Where ABCD are constant, right? A, B, C and D are constant. Okay. So determine the values of A, B, C, D. Given that, so the question is determine the values of, question is that determine the values of A, B, C, D, given that P of x equal to 0 equal to 1 by 6 and P of x less than 1 equal to 2 by 3. Okay. This is very important problem. This is a very important types of problem and ये बैकआउट में प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया. तो इसके बाद एक्सपेक्टेशन फाइंड करने का बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है. फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड एक्सपेक्टेशन, उसमें तो टाइप तो कुछ नहीं है, तो उसको फाइंड करना ऐसे लिख लिख देता हूँ, ठीक है.
चलो, find standard deviation, SD and expectations, right? तो एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और प्रॉपर्टी से एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का जो सारे प्रॉब्लम है ना, तो वो एक बार देख लीजिए। सपोज सपोज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे दिया। सपोज इफ टी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। देखो एक्सपेक्टेशन फाइंड कैसे कर सकते हैं, देख लो एक बार। मतलब एक्सपेक्टेशन फाइंड करने का जो प्रॉब्लम है ना, वो उसका एक मैं डेमो दे दिया, डेमो दे रहा हूँ, देखो एक बार। पॉजिटिव रियल नंबर, राइट, एंड n is a discrete, n is a discrete random variable, okay? Assuming the value 0, 1, 2 dot up to infinity with PMA probability mass function P of x equal to I equal to e to the power minus t, right? 1 minus e to the power minus t whole to the power I minus 1, right? And now find e of cx plus 2, राइट। ई ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला को यूज करके ये फाइंड करना है। एक्सपेक्टेशन का क्या डेफिनेशन है, एक्सपेक्टेशन का क्या रिजल्ट है, वो सारे सब फॉर्मूला यूज करके ये फाइंड करना। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड के चैप्टर 3 में और एक छोटा रिजल्ट है, सेंट्रल मूवमेंट्स, ओके? एक बार देख लेना, ठीक है? सेंट्रल मोमेंट्स, मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल में जो सेंट्रल मोमेंट का थ्योरम रिजल्ट है ना, एक बार जस्ट रिकॉल कर लेना, ठीक है? सेंट्रल मोमेंट्स, ओके? मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल में, मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, उसके अंदर एक उसके अंदर एक टर्म है सेंट्रल मोमेंट, राइट? सेंट्रल, एक बार, not more important but still just read this center, what is central moment, central moment के थ्रू एक तो प्रॉब्लम, ओके? तो just r is central moment means r central moment, okay? Just recall what is r central moment, r is central, एक see the see one problem about the central moment, right? This is little bit important, not more than important, not more important, okay? तो एक बार देख लो, find the find the
second, third, and fourth central moments of x, where p x equal to 1 equal to a and p of x equal to 0 equal to 1 minus a. So kindly check this type of problem. So exercise 3, question 3, and this is the question 4. Now, question 4. Expect finding expectation, variance, and standard deviation is very much important for this chapter, to find how to find expectations and find the expectation of these and find the standard deviation of these. This is important. Okay. Let's find the third central moment of the following discrete distribution. So x given and fi is also given. So x is what? 0, 1 by n, 2 by n, 3 by n, n minus 1 by n, and n by n, right? And fi is a 1 by n plus 1, 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 1 by n plus 1 by, right? और दो तीन टाइप प्रॉब्लम लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है. क्वेश्चन 5, if the random variable x has mean m and standard deviations sigma, then show that e of x minus m by sigma তার whole square equal to 1 and e of x minus m by sigma equal to c. This is very important problem. And another important question 6, a random variable x has probability function if x equal to 1 by 2 to the power x for x equal to 1, 2, 3 up to infinity. Okay, then find the mean. Sorry, find the mean. Just mentions or two problems. Okay,
A random variable x has following PMF x fi, right? X equal to xi. Okay, x equal to xi -2 -1 0 1 2 3. Okay, and 0.15 m 0.25 m 0.35 m. Then find the value of m. What is m? And first one is find the value of m, and second one is obtain the distribution function fx. Okay, this is very important questions. And another question, suppose this type of question is very important, say uh, say 7 and this is the 8, right? Question 8, find the probability distribution. Find the probability distributions of x, the number of sixes in two toss of a dice, right? This is very important question 8. And 9, question 9, say a random variable x has following probability function. Okay, say x equal to x and px, right? -2 -1 0 1 2 3 and 0.1 k 0.2 2k 0.3 and 3k, right? Find k. And first one is a find k, number 1. Number 2, first one is a find k, number 1. Number 2, what is the question? Number 2 is a evaluate thing. I have completed CN, DBMS, TOC, and aptitude. I studied, but I am confused whether I can tell after studying. I have very overthinking, disturb me, and advise me for overthinking, disturb me. Any advice for GATE 2027?
भाई इतना टेंशन मत लो भाई, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना वो बहुत मतलब ठीक ठाक है। डेली आप स्टडी, आई स्टडी 10 to 12 hours daily. This is very enough time. This is very enough for get exam, right? Right. So don't worry. Frustrated mat ho bhai. Frustrated. Don't be frustrated. Okay. Just relax and focus on your study. Right. Evaluate p of x less than 2 and p of x less than equal to 2. Thank you, sir. चिल रहो भाई, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक ठाक एग्जाम जाएगा। और गेट 207 के लिए बहुत टाइम है भाई। अभी तो 2026 चल रहा है ना, ये तो फरवरी मंथ, अभी तो 2026 का गेट खत्म हुआ थोड़ा दिन पहले। तो 2027 का गेट के लिए बहुत टाइम है। अच्छे से मतलब फ्री माइंड से अच्छे से स्टडी पे फोकस करो, हो जाएगा। डिमोटिवेट मत रहो। I have been forced them CSC. Okay, okay, okay. So P of 2 less than x less than 2 is what? And question 3 is the determine the distribution function. Determine the distribution function fx of x. Right? Determine the distribution function fx of x. And question 4, find variance of x and e of x cube plus 1. Okay, this is my questions, and this is very important types of question. And last 9 10, question 10 is suppose I give you k to k वाले हम प्रॉब्लम दे दिया ना, नहीं दिया, चलो तो लिख लो। Suppose question 10, the random variable x has PDF probability distribution functions, okay, and fx equal to k. So in this chapter में दो topics important है, probability distribution function and probability mass function, okay, 3k and 0 when if x equal to 0, if x equal to 1, if x equal to 2, and else where, then find the value, determine the value of, determine one the value of k. And question 2 is the p when x less than 2, and third one is the
Question 3 is the smallest value. The smallest value of k for which p of x less than equal to k greater than. So this is all about the third chapter. Okay, we have completed 3 chapters. First one, second one, and third one. Third chapter was the discrete random variable and its expectation. तो थर्ड चैप्टर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है फिर और एक बार समराइज कर देता है. देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके, उसके बाद एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, दैट्स ऑल. ओके, एंड सेंट्रल टेंडेंसी, सॉरी, राइट. उसके बाद क्या है ना, सेंट्रल मोमेंट्स, राइट. दिस इज लिटिल लेस इंपॉर्टेंट, बट स्टिल दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 3. तो आज का क्लास में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का जो इम्पोर्टेंस, टूल्स, कीवर्ड, डेफिनेशंस, फार्मूलाज, थ्योरम्स सारे डिस्कस किया. उसके बाद जो सारे प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, वो सारे डिस्कस कर लिया. तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं. चलो नेक्स्ट फिर मिलते हैं चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6. बाय.